Good morning, students. This is class 6, chapter 1, knowing our numbers, exercise 1.3, page number 23. So please open your page 23. We read the question and then start. Then question number 1 is that, see your book please. Estimate each of the following using general rules. First question is 730 plus 998. इसमें क्वेश्चन नंबर ए, बी, सी एंड डी दिए हुए हैं और उसके नीचे लाइन लिखी है क्वेश्चन में, make 10 more such examples of addition, subtraction and estimation of their outcome. मतलब हमें एबीसीडी ये चारों क्वेश्चन तो करना है, उसके बाद अपने मन से आप इस तरीके के 10 क्वेश्चन खुद प्रिपेयर करें और उनका जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करें. तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन और वी हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए इज 730 प्लस 998. Then round off. Round off nearest to tens. Nearest to tens. First we have given 730. 730 nearest to tens will be as it is 730. अगर ये 732 होता तो भी हम इसको नियरेस्ट टेन में क्या लेते बेटा 730. लेकिन अगर ये 735 होता या मोर देन 35 तो हम इसको ले लेते 740 नियरेस्ट. अंडरस्टैंड. सेकंड डिजिट है हमारे पास 998. 998. So this digit will become 1000 क्योंकि 98 जो है वो क्या बन जाएगा 100. 98 ये 5 से ग्रेटर है इसलिए ये 10 के नियरेस्ट चला जाएगा तो 98 100 में कन्वर्ट हो गया. 100 plus 900 is 1000. So this will become 1000. The estimated sum will be 1730. You understand? Similarly, question number B. Question number B will be 796 minus 340. 796 minus 314. Round off nearest to tens. Round off nearest to tens. Tens के nearest ले रहे हैं हम, यहाँ भी हमने tens के nearest लिया था, ध्यान रखिएगा. Then 796 ये nearest to 10 क्या होगा बेटा? Yes, 96. I have written here 96. So this will become 100 क्योंकि 6 5 से ग्रेटर है तो क्या हो जाएगा ये 800. क्या हो जाएगा 800 and 340. अब this will become 314. This is 4. It is less than 5. It is less than 5, it will become 10. 310. Difference करना है. Estimated difference. Estimated difference is equal to this is minus बेटा
0 minus 0 is 0. 10 minus 1 is 9. 7 minus 3 is 4. It will become 490. So अब आपको क्वेश्चन नंबर A और B I have explained you, and now C and D you will do it in your rough copy. But in this sum, if you have any problem, you have to ask, and if you understand, then you should write in comments, yes I understood. और ध्यान रखिएगा ये फेयर कॉपी में हमको नोट करना है, डेट डालकर नोट करना है, क्वेश्चन ब्लैक से, आंसर ब्लू से, और जो मैंने बोर्ड पर कराया है वही आपको फेयर कॉपी में करना है। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करेंगे। सी द योर बुक प्लीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड, गिव अ रफ एस्टिमेटेड by rounding off to nearest hundreds and also a closer estimated by rounding off to nearest tens। दोनों से हमको बताना है nearest 100 और nearest 10। अब आप इनको समझ लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड of A, so start first we write the digit। You understand better this sum? Okay, this is question number second. This is question number second. The first question is A, 439 plus 334 plus 334 plus 4370 plus 4317. This is the first question. See, the first case by rounding off to nearest 100, then we start rounding off to nearest hundreds. First case. First case. By rounding off to nearest hundreds, to nearest hundreds. Okay, ये हमने स्टार्ट में लिख दिया कि हम 100 के नियरेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। देन फर्स्ट 439, 439। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे अपन, तो 39 को देखना होगा, 39 इज लेस देन 50। तो जब लेस देन 50 होगा तो हम उसको 39 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और उनकी जगह हो जाएगा 0 0 मतलब 400। और डिजिट हमको थोड़ा दूर दूर लिखना है बेटा। 439 जो है राउंड ऑफ में आया 100 के नियरेस्ट में 400। अब है सेकंड 334, then this will become again 34 is less than 50, so this will also convert into 300, and next 4317, so this will become 4317. 17 is also less than 50, so we will remove it. 4300, and this will become the estimated sum. Estimated sum will be, here we will write the sign of plus, 0 plus 0 plus 0 is 0, again same 0, and 4 plus 3 is 7, plus 3 is 10, 0, carry 1, 4 plus 1, 5. So the sum will be 5000. Okay, this is the first case. And the second case for this question, second case. See, second case for the same question. And by rounding off to nearest, क्या कहा था हमको इसमें सेकंड केस में, सॉरी
by rounding off to nearest tens. By rounding off to nearest tens. Okay, tens के nearest. Then first digit, the question will be same. 439. 439. This will be round off in the tens. So 9 is greater than 5. Then this will become 340. Sorry, 440. Now, next question, 334. In tens round off, 4 is less than 5, so this will become 330. Next, 4317. 4317. Then 7 is greater than 5, so this will become 4320. 4320. Estimated sum is equal to 0 plus 0 is 0, 4 plus 3 7 plus 2 9, 4 plus 3 7 plus 3 10 0 3 1 and 5. 5090. So you have understand beta, nearest hundreds and nearest tens. The rest of the sum you should do in your copy, and you have do these sums in previous classes also, so you know better how you will do that sums. So this is just to revise your knowledge. So this sum is enough to note in your fair copy. Okay, now we start question number 3rd. Okay, see the book please. Now we start the question number 3rd. You understand everyone? Okay. Question number 3rd. Read it in your copy. Question number 3rd. Question number 3rd of A. C. Estimate the following products using general rule. A. 578 multiplied by 161. A. 578 multiplied by 161. 161. Start. B. Round off it in nearest 100. So we will write round off to nearest hundreds. 578 round off to nearest 100. This is more than 50, it will become 600. And 161, this is also greater than, yes, 61 is greater than 50, so this will become 200. And now we do the multiply. जीरो मल्टी जब हम किसी भी डिजिट को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जीरो जीरो ही आता है। तो जीरो को मल्टीप्लाई कर तीनों डिजिट को करेंगे तो आंसर बिकम जीरो जीरो एंड जीरो। जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, जीरो मल्टीप्लाई बाय 6 इज जीरो। हम चाहते तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, 2 6 are 12 और 12 लिखने के बाद 1 2 3 4 0 लगा देते, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। अगेन वन डिजिट कंप्लीटेड, सेकंड डिजिट, again we multiply by 0, then 0
multiplied by 0 is 0, 0 multiplied by 0 is 0, and 0 multiplied by 6 is 0. Third condition, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, and 2 6s are 12. 2 6s are 12. We add them 0, 0, 0, 0, 2, 1. 1 stands 100, 1000, 10,000. 1,20,000 is the estimated product. What is this? Estimated product. We can write it. Estimated product is equal. Clear? So now you have to note down this question in your fair copy, and exercise 1.3 is over. Rest of the sum I will explain again in your class when you will come here. But these questions you have noted in your fair copy, and those questions I have explained you should do as the homework. Clear, student? Okay, thank you very much.